Radhe Radhe students, welcome back to my YouTube channel Florence Nova. In today's class, we will learn an important nursing topic in a simple and easy way. So without wasting any time, let's get started. First up, asepsis and inflammations and infections. First is introductions. Definition of asepsis. Asepsis means conditions of being free from disease producing microorganisms, and aseptic technique methods to prevent microbial contaminations during invasive procedures. Prevent branches in skin integrity. Asepsis versus sterile. Asepsis means state of being free from disease causing microorganisms like bacteria, viruses, fungi, and parasites. Sterile, free from all biological contaminations. And medical sepsis is called clean, and surgical asepsis is called sterile. Okay, aim of an aseptic technique to prevent introductions of pathogenic microorganisms into susceptible sites like wound or bladders, to prevent transfer of pathogens from one patient to another, and to prevent staff from acquiring infections from the patient. Indications, uh, first is care of wound healing by primary intentions, फॉर एग्जांपल सर्जिकल इंसिजन्स, फ्रेश ब्रेक है, आपका सूचरिंग ऑफ वोन्ड्स है, या इंसर्शंस ऑफ यूरिनरी कैथेटर, any procedures where only uncontaminated equipments fluids should contact sterile body sites. Okay, uh, next आपका मेडिकल एसेप्सिस, स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनसे फ्री करना आपका मेडिकल एसेप्सिस है, जिसको हम क्लीन सेप्सिस भी बोलते हैं. फोकस किसके ऊपर करता है? रिड्यूस स्प्रेड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्रू फैसिलिटीज प्रैक्टिसेस, नॉट अबाउट स्टरलाइजिंग एवरीथिंग, focus on cleaning and preventing spreads. नेक्स्ट इज कॉमन प्रैक्टिसेस, हैंड वॉशिंग जो रिमूव करेगा आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, गाउनिंग, wearing facial mask when appropriate, and separating clean from contaminated materials, then patient educations on hygiene. Mainly used in ward areas, OPD and outpatient clinic. Appropriate hand washing by nurse and patient is the most important factor in preventing spread of microorganisms. Next is basic principles of medical asepsis. Hand washing. Next is separate clean and dirty. And next is prevent contaminations. Next, respiratory etiquettes. Next is staff handling. Next is clinical order. नेक्स्ट वेस्ट डिस्पोजेबल्स, नेक्स्ट आपका लिक्विड डिस्पोजेबल, नेक्स्ट इज मेंटेन डिस्टेंस, एंड नेक्स्ट सेल्फ प्रोटेक्शंस, एंड नेक्स्ट इज पर्सनल ग्रूमिंग. दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मेडिकल asepsis. Next, a concept is surgical asepsis. Surgical asepsis, also known as sterile technique, is strict process that include procedures to eliminate all microorganisms from an area. It is used in operating theaters, ward, during invasive procedure. Invasive procedures means जहाँ पे हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट बॉडी के अंदर इन्वेड करा रहे हैं, तो वो इन्वेसिव प्रोसीजर्स होते हैं. देन इंसर्शंस, जैसे फॉर एग्जांपल इंसर्शंस ऑफ सेंट्रल वीनस कैथेटर. नेक्स्ट इज differences. Medical asepsis, clean and reduce microorganisms, and आपका surgical asepsis, sterile and eliminate all microorganisms including spores. मीन्स स्पोर्स को भी ये रिमूव करता है हमारा सर्जिकल एसेप्सिस. To render an object and area free from all microorganisms including spores, used when performing procedures that enter body cavities normally free of microorganisms. And basic principles of surgical asepsis is sterile to sterile हम maintain करते हैं. Only sterile object can touch another sterile object. Open packaging safely कि
पैकेट को ओपन सेफली करना है, स्टाइल फील्ड मेंटेन करना है, अवॉइड मॉइस्चर्स की वेट स्टाइल को आपने अवॉइड कराना है। वेस्ट लेबल रूल कि आपने हर एक आइटम अपना वेस्ट लेबल्स या विद इन साइट मीन्स आपने रखना है। नो टॉकिंग एंड कफिंग, जो भी आपका स्टाइल एरिया होता है उसके ऊपर टॉकिंग या कफिंग नहीं करना है। एंड स्टे विद फील्ड, फील्ड के साथ रहना है, बैक नहीं करना अपने फील्ड के साथ। स्टाइल आइटम्स ओनली यूज़ करनी है, स्टाइल आइटम्स ओनली। एंड यूज़ ड्राई स्टाइल फोर्सएप, ये कोई भी फोर्सएप है वो डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशंस में सॉक्ड हुई आपने यूज़ नहीं करना है, ड्राई फॉर्म का ही फोर्सएप वहाँ पे यूज़ करनी है। बेसिक डिफरेंसेस क्या है हमारा मेडिकल एसेप्सिस एंड सर्जिकल एसेप्सिस? Medical asepsis, clean technique. Surgical is sterile technique. Medical is reduce numbers and growth and transmissions of microorganisms. And surgical is keep area objective free all microorganisms including spores. And medical is prevent transmissions of pathogenic organisms. And surgical is destroy all pathogenic and non-pathogenic organisms. फॉर एग्जाम्पल हेयर कॉमिंग या माउथ वॉश आपका मेडिकल एसेप्सिस टेक्निक होती है, वहीं पे गिविंग इंजेक्शन, सर्जिकल ड्रेसिंग आपके सर्जिकल एसेप्सिस होती हैं। क्लीन ग्रैप टू प्रोटेक्ट वर्कर्स एंड स्टाइल ग्रैप टू प्रोटेक्ट पेशेंट एंड डिस्कार्ड इफ कंटेमिनेशंस। ओके, outer 1 inch of style field is consider contaminations, means आपका contaminations हम consider कर लेते हैं, जो हमारा स्टाइल फील्ड है उसके 1 इंच बाद से ही आपका कंटेमिनेटेड एरिया उसको काउंट करते हैं। अगर कोई भी स्टाइल ऑब्जेक्ट उससे टच हो जाता है तो उसको भी हम कंसिडर करते हैं एज ए कंटेमिनेटेड। नेक्स्ट इज इन्फ्लामेशंस। फर्स्ट इज डेफिनेशंस। Localized protective reactions of tissues to irritations, injuries or infections, that is called inflammations. Purpose: protect body from infections and foreign substance like bacteria and viruses. Cardial sign is pain, redness, swelling, heat, loss of functions sometimes. So type of inflammations is first is chemical process. Chemical from WBCs are released into blood or affected tissues. Next is blood flow to area, increase redness and warmness. Third is chemical cause leakage of fluid into tissues and swellings. And next fourth is nerve stimulations, means pain. गोल क्या रहेगा? टू राइट द बॉडी ऑफ फॉरेन सब्सटेंस एंड स्टार्ट tissue repairs. Next is type of inflammations. First is acute inflammations. Durations less than 2 weeks. Response immediate and protective. Features local vascular exudate changes. Outcomes: when injury agent is removed, inflammation subside and healing with normal and near normal structures. Okay, next is chronic. Chronic inflammations, month to years, cause injuries agent persist. Acute response is perpetuate. Features: proliferative cellular infiltrations, necrosis, fibrosis. Outcomes: repair, breakdown together, considerations, scarring, permanent tissues damage. May begin without acute phase. Next is subacute inflammations. Durations falls between acute and chronic. Features: has elements of acute exudate phase plus element of chronic repairs, and term is not widely used. Causes of inflammations is physical cause, then physical cause जैसे mechanical injuries वगैरह, then आपका chemical cause acid burn, drugs, venom. Infectious cause bacteria, all microorganisms. Ischemic जैसे lack or restrict blood supplies. Immune, autoimmune conditions and allergies. Process of inflammations when injury occur. First is vasodilatations. Arterioles dilate होनी start हो जाती हैं, increase blood flow and result in redness and heat, means redness आना start हो जाता है उधर. Next है increase vascular permeabilities
endothelium cells become leaky and due to direct injury or chemical mediators. Next is exudations, fluid, protein, RBCs, WBCs escape from vessels and due to increased osmotic pressures and hydrostatic pressures causing swelling. Then vascular stasis होनी start हो जाता है, slowing of blood flow, then allow chemical mediators and inflammatory cells to collect. Next is stages of inflammatory reactions. Inflammatory reactions means combinations of overlapping reactions in the body. Three main stages यहाँ पे start होती हैं. First is tissue injury. Tissue damage occur from trauma, trickles, collisions, falls, microtrauma, injury due to overuse. Injury triggers inflammatory response. नेक्स्ट रिलीज ऑफ केमिकल्स, ये केमिकल्स रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है, वेसोडाइलेशंस होना स्टार्ट हो जाता है, ब्लड का फ्लो वहाँ पे इंजरी साइट पर इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है. देन ल्यूकोसाइट माइग्रेशंस, कीमोटैक्सिस एंड न्यूट्रोफिल्स माइक्रोफेजेस आपके वहाँ पे स्टार्ट हो जाती हैं. Tissue repair after inflammations. What happened after WBCs clear the area? First is cell replacement. He destroys cells replaced by identical and similar cells or are replaced by fibrous tissues or scar tissues. Next is healing process. Promote tissue healing. Formations of fibrous scar tissues may occur. Then scar tissue may reduce functional capacity of tissues. नेक्स्ट इज टिश्यू हीलिंग. टिश्यू हीलिंग आपका 4 फेजेस में चलता है जिसको हम वुंड हीलिंग यहाँ पे बोल रहे हैं. फर्स्ट इज कोलेजनेशंस, macrophages clear damaged area, then fibroblasts make collagens matrix and framework for new cells. Then angiogenesis means new capillaries sprout to bring blood to the area, then allow uh, sorry, also called revascularizations. Just for example, muscle cell repopulate muscles, tears areas. Next, proliferatives last up to 4 weeks and new tissues mixtures of specific cells and granulations tissues. If granulations tissue remain, form scar tissues and decrease functions. And last is remodeling. New cells mold into surrounding to form functioning tissues and take a month to years. Then protein fibers arrange according to stress. Okay, next is systemic and local sign of inflammations. Inflammatory reactions is characterized by 5 cardiac signs and 1 systemic sign. 5 cardiac sign is redness, arrhythmia जो रहेगा, then warmness means heat, then swelling, edema, and then pain, and last is loss of function sometimes. These all are cardiac sign, 5 cardiac sign, and 1 is systemic sign, that is fever. प्रूलेंट एक्सुडेट पस रेयर रहता है आपका. ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लामेशंस की कॉन्सेप्ट अगर हम बात करें तो इन्फ्लामेशंस इज ए प्रोसेस नॉट ए डिजीज. ओके, it is a short term protective response. And when does it subside? Once the cause of injury is neutralized or integrity of tissues is secure and inflammations gradually subside. Treatment required if inflammations continue to persist and if it is causing significant discomfort, then treatment is required. Management on inflammations is NSAID, non-steroids anti-inflammatory drugs जैसे पैरास्टामोल वगैरह आप वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो. कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स यानी कि स्टीरॉइड्स आप वहाँ पे प्रोवाइड करोगे इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को स्टॉप करने के लिए, जैसे हाइड्रोकॉर्टिसोन आप वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो. एंटी हिस्टामिन्स आर रिलीज बाय बेसोफिल्स एंड मास्ट सेल इन एलर्जिक रिस्पॉन्स. नेक्स्ट इज हॉट एंड कोल्ड थेरेपी आप प्रोवाइड कर सकते हो. Okay, next है infections. Infections means invasions of the body by pathogens or microorganisms capable of producing disease. Key points: infections, infections, entry,
plus multiplications of disease producing agent in body tissues and then cellular injury, that is called infections. Infections agent कौन होंगे? Microorganism. Communicable agents कौन होंगे? Agent transmitted by direct or indirect contact, vehicles or airborne routes. Then communicable disease, a disease produced by these agents. And then colonizations means multiplications of microorganisms. नेक्स्ट इज सोर्स ऑफ इन्फेक्शन. सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की अगर हम बात करें तो क्या रहेगा? ह्यूमन सोर्स हो सकते हैं आपके, एनिमिनेटेड सोर्स हो सकते हैं जैसे इन्फेक्टेड एनिमल्स वगैरह, या इननेमी सोर्स मीन्स कंटेमिनेशंस आर्टिकल्स या इक्विपमेंट्स वगैरह आपका सोर्स हो सकता है. चेन ऑफ इन्फेक्शंस की अगर हम बात करें तो क्या रहेगी? फर्स्ट इज इन्फेक्शियस एजेंट, microorganism with ability to cause disease. Three factors determine disease is virulence means ability to grow and multiply, invasiveness means ability to enter tissues, and pathogenicity means ability to cause disease. For example, bacteria, virus, and fungi and parasites. Next is reservoir, place where microorganisms thrive and reproduce, and just for example human beings, animals, water, tabletop, and doorknob. Portable of exit, way of microorganisms to leave the reservoirs, nose, mouth. Mode of transmissions, how agent travel from one reservoir to host. डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हो सकता है, एयरबॉर्न, वेक्टर्स, व्हीकल्स, ये हो सकते हैं आप लोगों के. पोर्टल ऑफ एंट्री, way of microorganisms to enter new host, respiration tract, GI tract, broken skin and mucous membranes. And then susceptibility, host means person who can get infected, depend on immunity, age, health status. मोड ऑफ ट्रांसमिशंस की अगर बात करें तो मोड ऑफ ट्रांसमिशंस जैसे अभी डिस्कस किया कि कैसे वो ट्रेवल करेगा. तो मेथड ऑफ ट्रांसफर बाय विच द ऑर्गेनिज्म मूव इज कैरीड from one place to another. Key points: bridge the gap between portal of exit of biological agent from reservoirs. Portal of entry and opening allowing the organism to enter the host. Type of portals means natural orifice, mouth, nose, vagina, urethra, and artificial orifice is जैसे ट्रैकोस्टमी, इलियोस्टमी, कोलोस्टमी, बॉडी कैविटीज, IV fluid replacement. Then mucous membrane is line most natural and artificial orifice. Then skin breaks जैसे accidental damage here, deliberate incisions etc. Mode of transmissions के अंदर ही आपका method by which an infectious agent can become a means agent is transferred from a source reservoir to a susceptible host. Basic modes: contact transmissions, droplet transmissions, and airborne transmissions, vector transmissions, and vehicle transmissions. जैसे आपका contact transmissions means direct contact means physical contact के साथ जैसे जा रहा है आपका. नेक्स्ट ड्रॉपलेट जैसे कफिंग, स्नीजिंग वगैरह के साथ जो आपका जाएगा. एयरबोर्न ट्रांसमिशंस जैसे ससेप्टेबल होस्ट इनहेल ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई और डस्ट पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन एयर. देन वेक्टर ट्रांसमिशंस जैसे मलेरिया बाय मॉस्किटो है, प्लेग बाय रोडेंट फ्लाइज हैं. व्हीकल ट्रांसमिशंस मीन्स जैसे वाटर, फूड, मिल्क, ड्रग्स, ब्लड एटसेट्रा. How to break each link: infectious agent, rapid accurate identifications of organism, treatment of underlying disease, then reservoir, employees health, environmental sanitations. portal of exit को हम कैसे break कर सकते हैं? proper aids, hand washings, control of secretions and excretions, trans and wash waste disposables. Mean of transmissions: isolations, food handling, airflow control, portal or entry, hand washing, sterilization, aseptic technique, catheter care, wound care. Susceptibility: host, recognize of health
high risk patient, treatment of diabetes, surgeries, burn, cardiopulmonaries, immunizations. Preventions, transmissions of infectious microorganisms, general measure, proper hand washing, use of PPE, proper waste disposable, isolation procedures, insect or rodent control, documentations of surface and decontaminations of surface and instrument. Course of infectious, first is incubations period. Incubations period is period between entry of pathogens into body and appearance of first symptoms. Then prodromal stage is interval interval from onset of non-specific sign to more specific symptoms. Next is illness stage, intervals when client manifest sign and symptoms specific to the type of infections. And then convalescence stage is intervals when acute symptoms disappear. Okay, thank you.